or screen is visible. So yes, okay. Abhi, now we'll talk about the language of expression. You have to understand that when All India program is there, I cannot speak in Marathi, that is my mother tongue, or I cannot speak in some regional or state language. To speak in national language, Hindi, obviously. Now I can mix English because some people, along with Hindi, they need English support. That is okay. That is acceptable. But it doesn't mean that I will be able to speak English. I do not have problem with English, though I am from vernacular medium. But it's for the common audience, so everybody understands Hindi. So conversation will go in Hindi plus English. Wait, Marathi will also come. You have to accept it positively because it's my mother tongue. Okay. So it's 9 p.m. around. 3 minutes are left. So we will do one thing. We will start recording in a minute or so, and then we will start the class. Okay. I have given sufficient explanation, Mr. Britt. Okay. Now, after this explanation, suppose you have issue in understanding, then kindly accept my apology. Okay. Good evening, everybody. We are starting with our class. Okay. This is our second session, online sky observation experimentation. That is how I take it. एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, स्काई ऑब्जर्वेशन करना है और ऑनलाइन तरीके से करना है. थोड़ा हास्यास्पद, मतलब थोड़ा ऐसे लगता है कि आई एम जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट और नो, इट्स नॉट. आई एम just trying to make use of your holidays. The summer holidays are going on. Okay, many people are free, students specifically, and everybody loves sky watching because it's humanity which has got into this, and then now we are into the science technology and reached to the highest height of evolution. तो ये जो evolution के highest इंसान खड़े हैं, इसका सारा श्रेय इंसान की मेहनत को, उसके क्यूरियोसिटी को, बट क्यूरियोसिटी जागृत करने वाले आसमान को यानी स्काई को भी जाता है. So let's get into this one. Some latecomers will keep troubling, can't help it. Let's get into the today's sky observation. So this is our first slide, and always I said the second slide is all about acknowledgement that this particular presentation details everything is from internet, and so many good people are around world putting so much information on internet. At some time, youngsters for youngsters it is difficult to get the exact information. So I thought that I will guide them here little bit. Today and last session content I wanted to discuss here. Whatever is written in a black text is already covered, and whatever is in some different color is something we will be covering today partially, not fully. So expected input from your end was you're sitting in some open space. Hopefully sky is clear. Hopefully is because we do not have any clear sky conditions since 6th of the May. 6th May क्लास हुआ था ऑनलाइन लेक्चर का, शायद 6 या 7 को. तब से लेके अब तक rarely we had clear skies. In between we had started from western coastal region of India. I'm talking about Mumbai, then the Western Karnataka border going to the Kerala, Kashmir, Assam. So can you tell me, anybody, what is the sky condition at your end? Everybody can tell. Put your name, put your location, the way Pramita Purkastha has put up. She's from class 5th, and then Kashmir, Assam, she is from. I hope आपको हिंदी इंग्लिश दोनों जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रही होगी. आपका स्काई कैसा है परमिता जी? Just put sky conditions please. I hope it will be slow. मैं इस तरीके से बात करूंगा स्लो हो जाएगा, बट आपको थोड़ा फील आएगा. क्लाउडी लुधियाना में क्लाउडी है. जयपुर Hyderabad it's raining. Okay. Some other people, please let me know. Somebody has got clear skies, or else we will go little theoretical. Okay. Shweta, you have clear sky or not? Shreya, cloudy. Everywhere it's cloudy. Okay. Belgaum, what is the sky condition? No moon today. Don't expect moon. Okay. I'm talking about sky. Clear skies at least. Okay.
It's a JNV Pali. Okay. So it's RJ, Rajasthan. Okay. So somebody has got clear skies. Now I'm going to get into objective of the session was to inculcate scientific temperament. आपको sky के बारे में जो interesting hobby है उसमें involve करना है. And then someday you will be taking some sky observations for the entertainment, education. मतलब education भी हो और entertainment भी हो. Then basics of sky observation theory we have studied last time. We talked about longitude, latitude, Greenwich meridian time, degree. What does exactly degree means in sky, minutes means in sky, and seconds means in sky. And then we went into the observation part of Mercury. We have finished. We talked bit about Orion, Ursa Major, Ursa Minor constellation, Leo constellation, Canis Major, Canis Minor, and Origo constellation. Nakshatras, few nakshatras I touched upon, that is Rohini, Mrigashirsha, Pushya, Magha, Swati, Chitra, and Hasta nakshatra. Sun sign, Cancer, Gemini, Leo, and Virgo, Aquarius. We talked of Aquarius. We specifically talked about because we are talking about Itwa Aquarides, that is meteor. एक meteor shower आपको देखना था. इसके बारे में भी आप चैट बॉक्स खुला है तो लिख सकते हो कि कितने लोगों ने उस दिन बाद after that particular day, how many of you have tried to watch the Eta Aquarides and how many of you have got the score. आपका स्कोर क्या रहा, आपको 3 दिखे, 4 दिखे, 30 मीटियोर दिखे. हम लोग, मैं और मैडम तकरीबन 1-1.25 घंटा थे, बट हमको सिर्फ 1 मीटियोर दिखा. ओके, तो ये बहुत ही पुअर काउंट है, बट कुछ भी मतलब आई एंजॉय सच टाइप ऑफ थिंग्स, तो मुझे अच्छा लगा. ओके, सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, this particular thing, Eta Aquarides input I expect. Okay, C2. Then now we'll go into the Messier deep sky objects we didn't study. So this time we will talk about that. Okay, let's get into identifying constellation is today's first agenda. Many of you don't have anything in sky, but then theoretically we can do that. So I'm just getting into the sky. Okay, ये मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दिखा सकता हूँ, और सॉफ्टवेयर से जरूरी है स्लाइड, क्योंकि वो रुकेगा, ज्यादा मेमोरी नहीं खाएगा, तो चीजें आसान हो जाएगी. दिस पर्टिकुलर थिंग एक अलग मोड में है तो काम कम करेगा, मूवमेंट ज्यादा करेगा. दिस इज वेयर वी आर. दिस इज द लास्ट 6th of the May का ये स्लाइड था. हम इसमें नहीं जाएंगे, जा सकते हैं सिर्फ इसके लिए, बट उसके आगे है, जैसे 13 का मैंने स्काई बनाया था. देन नाउ वी हैव, हम लोग रीच 20th को है. तो पहले as sky is moving faster or little moving ahead with the eastern people, तो हम कोलासिब मतलब मिजोरम के लोगों को आसमान में क्या दिख रहा है, वो 9 बजे तकरीबन 7:30 का लिखा है, 9 बजे का भी होगा आसमान मेरे ख्याल से, नीचे होगा या 7:30 वाले आसमान. अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्स्टिलेशन. वो नाम आपको देखने हैं, और फिर आपको मैं जब आगे फिर से पूछूंगा तो मुझे नाम बताना. आपने आज हम ओरायन कॉन्स्टिलेशन पढ़ने वाले हैं. स्काई कंडीशन ठीक नहीं है तो एक्सपेक्टिंग कि इवनिंग यू विल हैव समबडी टू सी द tomorrow you will be able to see Orion and Canis Major, so we will see that. But temporarily I'm showing you just Orion. Okay, this is Orion, you know, this is the Orion. We have Betelgeuse, then adjacent to that we have Rigel, Saf, Bellatrix, and these 3 are Alnilam, and Mintaka. Okay, so adjacent to that Orion constellation, we have Lepus constellation, Shasha, Auriga, Sarathi constellation. Then I'll just take, this is Perseus constellation. Okay, hidden here is a Taurus constellation. This is a Columba, Paravat means कबूतर जैसी चीज. ये कॉन्स्टिलेशंस देखने के बाद हम थोड़ा स्काई को नीचे लेते हैं. ओके, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आसमान जो देख पा रहे हैं, दोज पीपल हैव नाउ समथिंग अबव दिस सर्कल. मतलब ये लाइन अगर मैं खींचूं, इसके ऊपर आपके आसमान में जरूर कुछ ना कुछ दिख रहा होगा. ये लाइन के नीचे तो इवन कोलासिक पीपल विल हैव समथिंग टू सी अराउंड दिस. मींस ईस्ट मोस्ट पीपल विल
समथिंग टू सी लाइक दिस। तो अभी हम देखेंगे दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन विच इज मोनोसेरस। Monoceros has got very feeble stars, so you will not be able to see Monoceros. But as I said, Canis Major यहाँ पे है, जिसमें सीरियस नाम का रात के आसमान का सबसे ब्राइट तारा है, वो आप देख चुके होंगे, नहीं तो कल देखेंगे। पुपीस वगैरह जो है वो सदर्न मोस्ट है, तो वो नहीं दिखेंगे। अभी आपके आसमान में जेमिनी जरूर होगा। जेमिनी के साथ यहाँ आपको बोलेंगे कितने सारे सर्कल हो गए, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ एक एक करके, और फिर आपको फिर से रिड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, सो नाउ वी विल गो इनटू द समथिंग which will be visible in your sky. So आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। आपको थोड़ी तकलीफ देने वाला हूँ, मैं अभी नाम बताने वाला हूँ, बाद में आपको नाम पूछने वाला हूँ, चैट बॉक्स में आपको लिखने हैं। तो ये जो है, ये भाई कैनिस माइनर, कौन सा वाला, ये इसमें आपको एक प्रोसियन दिखेगा। ये कैनिस मेजर है। आप बोलोगे इधर नीचे पड़ा क्या है, वो चंद्रमा है, वो पुराने दिन का है ये स्काई, इसलिए आपको वहां दिख रहा है चंद्रमा, वो एक्चुअली नहीं। देन मैंने आपको बोला था इनको पकड़ के यहाँ पे एक गेट बनता है जिसको हम बोलते हैं गेटवे टू द हेवंस। तो ये गेटवे टू द हेवंस बना, कैसे बना, ये इस तरीके से। मैं अभी कैनिस मेजर का सर्कल और प्रोसियन का हटा देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ मैं अभी ये जो लाइन है इसको खींचा, ये जो लाइन है इसको खींचा, और यहाँ अगर आप ज्यादा अच्छे से स्काई कंडीशंस होंगी तो देखेंगे, तो यहाँ आपको एक आर्क दिखेगा। इस आर्क को, इसी में से ये चंद्रमा आया, इसी में से सूरज, इसी में से सारे प्लैनेट्स मतलब वॉन्डरर्स जाते हैं, तो इस एरिया को गेटवे टू द हेवंस बोलते हैं। तो ये आपके आसमान में अभी होगा, नहीं तो जब क्लियर स्काईज होंगे तो जेमिनी के आसपास, अराउंड जेमिनी यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, so now we'll again go little closer. So we talked about now many constellations out of 88. At least in this particular sky map we are going to see at least 50 or 40 50 constellations. I'm just doing recognition part in case uh, everybody is not using software, everybody is not using sky chart. Then I thought that this time, that is today, I'll just at least tell you what is where. Actually you are not going to see this line diagram in sky, but in star diagram, how to identify, for that you have to at least go through the line diagram. So we get putting this Herculean exercise, and we are going to this line diagram. So next go further. Cancer will be properly visible because of the M44 beehive cluster in, and now it is around zenith, so you will be able to see. Something links written over there, you will not be able to see. Camelopardalis here, you will not be able to see. Links you will not be able to see. Pyxis you will not be able to see. Some stars of the Vela you will be able to see, but not all. So now I am moving again to the down. Okay, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ. Okay, मैंने और नीचे लिया, और नीचे, और जिनको मैंने दिखाया था मैं उनको हटा, ताकि मैं आपको बाद में पूछ सकूं कि कौन सी कॉन्स्टलेशन क्या है. नाउ आई एम गेटिंग इट लिटिल मोर डाउन. ओके, दिस इज समथिंग विच इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टलेशन, जिसका मैं अभी ये कर, दिस इज दैट, ये हाइड्रा है. ओके, दिस इज हाइड्रा. सेक्सटन्स विल नॉट बी विजिबल. Crater will be clearly visible. Leo will be clearly visible. Leo minor will not be visible, but Ursa major will be clearly visible. Ursa minor will also clearly visible. Draco, that is Kale Yesab. NS Vinity C will be visible in case sky conditions are good. And now we go further. Oh. So this is where we are. I'm just listing something. It may be little boring for you, but in case you are sitting in on terrace, this may be interesting. So I'm moving further. Leo crater I have finished. Canis Veniti C I have finished. Now I'm taking you to the Corvus, that is Hasta Nakshatra, which we have seen last time. So this is Corvus. This is Virgo, means Kanya Rashi. This Chotu is Chitra. Sorry, मैंने गलत ड्रॉ किया, गलत मतलब गलत जगह मार्क किया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. This is
Chitra. This is Swati. This is Bootus constellation. This is Corona Borealis. Something similar to the Corona Australis. Something you have heard in last 2 years, that is Corona. Corona means मुकुट जैसी चीज. तो ये बोरियालिस में उत्तर मुकुट है, ऑस्ट्रियालिस मतलब सदन मुकुट. ओके, तो ये मुकुट है, इस मुकुट में एक मुकुट मणि है. तो भाई यहाँ तक हमने देखा. Now I will again undo वाला कर दूंगा पार्ट थोड़ा. Give me seconds. And now I'm taking you to this Centaurus constellation. This is where we have closest star system, that is a Alpha Centauri, then Proxima Centauri, then Libra is rising. Then we have here some constellation, here Hercules coming. So all these constellations I have identified. Now I am going to test, because sky conditions are not okay. In case it's okay, you can check it in the sky. In case it is not okay, then you can check it. I will check you here. Okay, so just give me a second. Now I am going to ask you some questions based on existing things here. ऊपर से चलेंगे. Okay, so ऊपर से चलते हैं. I'm going to ask you name. You have to put it in the chat box. Tell me the name of this constellation. चलो इस constellation का नाम बताइए फटाफट chat box में. आसमान नहीं दिख रहा है. You don't have to bother. Very good. So some people are quite sincere. Param has already answered. Then okay, so many people. So everybody, it seems everybody. Now don't open up the software and put the name. Okay, this is testing for your own study, learning, and so many things. Okay. Okay, now if everybody is so fast, let's get into something which is here, which is this constellation. Chalo chalo jaldi. Which is that constellation? Very good. But in case you are telling by seeing software, don't do that. Then it will not build your own fundamental stock. Okay, Centaurus. Okay. Pranam has confessed that he knows these things. Okay, good. So now let's get into this. Which is this constellation? In Hindi. In Hindi, English, you can put both. Which is that constellation? I have circled something. Aryan, it is not Saptarshi. Manas, it is not Saptarshi. It's Arsa. No, Param, it's not Hasta. It's Arsa minor. Dhruva Matsya. Dhruva Tara hai na isme, pole star. This is that pole star, okay? This is that pole star, na? So this is Ursa minor. Very next. Why I am doing all these things? Because I thought that today, in case sky conditions are not good, we will at least have some other understandings. So now I just want to know which is this constellation. Which is this constellation? Make it fast, because we are going to have it for 1 hour only. So it's 9:50. We will stop at 10 p.m. So I said this is Vela constellation. Okay. I told you only name. I didn't tell you, explain you anything. It's basically sail of the Argonaut ship. So previously there were many other constellations. When we talked about the 48 constellation from where we have started, 48 constellation थे जिससे शुरुआत हुई. अल्माजिस्ट करके था, टॉलेमी का एक ग्रंथ. Okay, one book. Then later on, International Astronomical Union has made the 88 constellation. So previously there was something Argonavis वगैरह ये सब नाम आपने सुने होंगे. एक बड़ा शिप था. Later date that was distributed and made it to the various constellation. One of them is now Vela, and Vela is the sail of that particular ship. So this is that Vela. Okay. Now we will go into something which I have explained last time.
So let me take you there. Sorry, I'm not good at editing in PDF, so it is taking little extra time. You have to tell me which is this constellation. Which is this constellation? And in case by chance you are able to see it in the sky, southern side, it's a crux, not cancer. Okay, there is something written, no? Mimosa and other written. So it's basically name of the star, but that whole constellation is the smallest constellation out of 88 constellations, and name is crux. Okay. In Hindi, it is called Trishanku. Last time I must have told you the story of the Trishanku, the king who wanted to go to heavens with his humanly body. So somebody tried from the earth, and then somebody opposed from the heavens. It's all mythological story. और फाइनली ये हुआ कि भाई साहब बीच में अटक गए, तो ना हेवन में जा पाए ना पृथ्वी पे पहुंच पाए, तो दोनों के चक्कर में बीच में लटके हुए व्यक्ति को त्रिशंकु बोला जाता है. उसका रिप्रेजेंटेशन ये क्रक्स कॉन्स्टिलेशन करता. उसमें बहुत इंटरेस्टिंग तारे हैं, बट वी विल नॉट गेट इनटू दैट पार्ट नाउ. सो आई ट्राइड टू get some feeling from you that by chance you remember some star constellation. Now let's get into the some other identification. You have to identify this for me. What is it? चलो जल्दी आइडेंटिफाई करो. Param is now making mistakes. Param, Bhaiva, Bhaiva. Okay. That is not Orion. मैंने जिसको सर्कल किया है, you must be seeing that's not Orion. That's crater, चषक. ओके, एक चषक है जिसमें अमृत को इकट्ठा किया गया था. तो दिस इज दैट पर्टिकुलर crater. Anyways, चलो. You will learn by the mistakes. So now the next. What is this? Here you can try your knowledge. I have marked something else. I hope I'm properly audible. Screen is visible. Let me check it with my people. It's okay or not. I'll come in second. तो मुझे तो कंफर्म मिल गया, कंफर्मेशन की आवाज ठीक से आ रही है, दिख भी रहा है. ओके, इट्स द हस्त नक्षत्र. परफेक्ट. ओके, तो आपने you have identified some constellations. Now take some time. In case you are sitting on terrace or some open area, and by chance you are able to see the sky, please try to identify this, so that I will take you to the software Stellarium, and I'll put that software into the present sky conditions. And then in case you wanted to know that particular key, that particular thing need to be checked from your end, so then we will do that. Just give me a second. I'll window, share window, which is that. Okay, still it. Share. Now you have to tell whether the screen is properly visible or not. Just give me a second. Then leave. Give me a second. I hope I'm discard. Okay, the Stellarium is here now, and you know the software details. So now I'm setting it from the Mumbai. Presently, it's Bhilai. This sky area, which is located in Chhattisgarh. Okay, so nearby Raipur. So now I'm taking it directly. Stop sharing height. Okay, give me. Okay,
So this is the condition when time is set 21:21, which is time in my clock. तो 20 मई को 21:21 पे भिलाई के स्काई का कंडीशन ये है. अभी मैं वॉच बंद कर देता हूँ and I will move it to the some different location window so that at least some people will get to know. So I'm taking it to the, initially I'm taking it to the Ludhiana. Okay. So this is condition of the Ludhiana. Okay. Now, today we are going to talk about Orion and Canis Major. Both of them are not in scene now because they have already set. And why we are studying this? Because in case we go to the little early sky, that is, this is now 9 p.m. almost. So we go to the 20, we go to the 1922. Now I'm just taking it to the night mode condition. And then you will be able to see Orion is there in sky and Canis Major. Both of them are. So these are setting now. So those constellations you will be able to see somewhere in a July in a early morning. तो जुलाई में जो अर्ली मॉर्निंग में दिखने वाले पर अभी शाम को दिखने वाले उनको देख लेते हैं, तो उनके बारे में आज पढ़ेंगे. इसलिए मैंने आपको ये सब चीज दिखाने का सोचा है. तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल शो यू सम deep sky objects in Orion constellation. So before going into the studying of those particular things, we will get into the particular part which is related to the deep sky. एक मिनट, give me a second. मुझे भी कभी कभी सिस्टम ऑपरेट करने में तकलीफ है. So just give me a second. I'm talking about Orion. So Orion constellation has got Messier objects. Messier object M42. Okay. And M43, M78. So move to this to control F. And I'm going to M42. Okay. And so you can see what I'm talking is here. Just now nothing you are able to see. Okay. So I'm just changing bit of the time. This is something which is Orion. I don't know. Just wait. It will come in your screen also. By that time, I'll join another system also. I hope it's visible in your screen or not. I don't know. Just check. Somebody can. It's not visible properly in your screen. So I will do one thing. I'll just come out of this sharing. And we will go in very simple mode, which is here. Okay. Share screen. Start sharing. And then I hope presentation is here. Okay. This is something which is far better and clear vision. So we will go into this. So today's menu we are going to talk about is about Canis Major. Okay. Oh, sorry. Orion. Mruga. So this is that Mrugatarka Samuha. So talk about Mrugatarka Samuha, and then we will get into the Canis Major in case time permits. So those who are interested in seeing the sky, they should not only keep their interest limited to seeing the sky and enjoying its beauty or doing some astrophotography. Okay, you should always think that you want to go ahead and you want to take or conduct similar sessions. आपको ऐसे टाइप के सेशंस टेरेस पे, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, गांव में लेने में इंटरेस्ट होना चाहिए. ये अगर आप सब करोगे, ये जो अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ओरायन कॉन्स्टिलेशन. Orion is very prominent constellation. Everybody
all over the world, and everybody, almost in every ancient developed civilization, were knowing about Orion and Saptarishi, about Leo constellation. But Orion inscriptions are there few thousand years back. Not few means 4,000, 5,000. This may be 40, 50,000 years back. There are some inscriptions in some cave where they have put up this particular Orion markings. I don't know how many of you have watched that 10,000 BC movie. In that particular also, that particular main female character has got marking on her backside of the palm is of Orion. So if this is of that particular importance, then we need to understand Orion constellation. Lot of material is available on internet, lot of books are available. Today we'll try to cover up something. This is Orion the hunter as per the Western philosophy, and Mruga means Hiran, okay, as per the Indian philosophy or Hindu philosophy. So as per their philosophy, the hunter looks like this, whatever is shown in adjacent image. But actually in screen, what you can see is this. Top one is basically Betelgeuse, then Alnitak, Alnilam, Mintaka, Ragel, Ceph, and Bellatrix. And in between, you have some M42, that is Orion Nebula. Then you have M78 and other things. Temporary, we'll see the imagination that they have made. In between, when we imagine that Orion the hunter, we have Betelgeuse, Bellatrix in the shoulder of that Orion. Then Orion's belt is basically Alnitak, Alnilam, and Mintaka, these three stars. And bottom one, legs representation is by the Rigel and Ceph. Okay, Ceph's name comes from the Arabian civilization who has retained the knowledge of astronomy during the अंधार युग जिसको हम बोलते हैं में ये काम हुआ. तो यहाँ पे हम उसकी इमेज देख रहे हैं. स्काई व्यू कुछ इस तरीके का है जो हमने हमेशा ही देखा. दिस इज सेटिंग व्यू जो हमने अभी देखा. देन टॉप साइड में ये जो सीरियस दिख रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Canis major constellation along with the Orion constellation, and bottom side with the Taurus constellation has got lot of importance in Hindu philosophy, which we will mention at later stage. Give me a second. ये मर्क्यूरी जो हम उस दिन देख रहे थे वो अभी ये ओरायन के सामने वाले टॉरस कॉन्स्टिलेशन के नीचे की तरफ है. बीच में हम लोग 13 तारीख को लेक्चर लेना सोचे थे, तो मैंने 6 तारीख का मर्क्यूरी का कितना विजिबिलिटी है मैग्नीट्यूड वो उसके लिए फोटो दिखाया था आपको. 13 तारीख के लेक्चर में तो विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट पुअर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रेसेंट कंडीशन में मर्क्यूरी गया. वो उधर का ही नियर बाय रीजन है, इसलिए मैं दिखा रहा था. बट टुडेज डिस्कशन इज ऑन ओरायन. तो दिस इज द नेमिंग सिस्टम. इस पर्टिकुलर नेमिंग सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ जो विजिबल स्टार्स है अप टू मैग्नीट्यूड 6 वो दिखाए गए हैं. सो नाउ वी विल नो लिटिल बिट अबाउट दिस ओरायन कॉन्स्टिलेशन. तो ये मेरे ख्याल से बेटर फिगर है जो आपके सामने रहेगा. Whenever we talk about some specific constellation, normally we go into its history, some mythological misconceptions, then something which is mentioned by the International Astronomical Union, some detailing on the major stars and star system in that particular constellation, and some deep sky objects. So deep sky objects, what we will be studying is M42, M43, and probably M78. So let's get into the initial known things. It has association with one particular meteor shower, which is from the period of October to November, and the peak is on the 19 to 20 October. This is called Chai Orionids. तो ये भाई अक्टूबर के पीरियड में जब ऑलमोस्ट रेनी सीजन से आसमान क्लीन हो गया होता है और उस पीरियड के बाद ओरियनिड्स होता है, तो विजिबिलिटी काफी अच्छी रहती है. हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी एज फार एज कंसर्न, पहले हम चलेंगे हमारी फिलोसॉफी में जो अच्छे से इंग्लिश में मैं बता सकता हूँ, बट हिंदी में मराठी में बहुत ज्यादा अच्छे से बताया जा सकता है. बेसिकली ये जो ओरायन कॉन्स्टिलेशन है, ये ओरायन कॉन्स्टिलेशन इज अ मृग हिरण, बट ये कोई और नहीं है, ये प्रजापति ब्रह्मा है. ओके, और प्रजापति ब्रह्मा जी की जो 27 कन्याएं थी उनके साथ चंद्र मतलब मून का शादी हो गया था. क्यों? क्योंकि मून पासेस थ्रू दिस पर्टिकुलर 27 नक्षत्र विच आर एक्चुअली इनलिस्टेड और मेंशन्ड बाय द हिंदू फिलोसॉफी. तो ये चंद्र 27 कॉन्स्टिलेशंस में से चंद्रमा पास होता है, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड
भाई 27 नक्षत्र जो नाम है उन 27 लेडीज के साथ या प्रजापति ब्रह्मा के डॉक्टर्स के साथ मून की शादी होगी। इन सम वर्स्ट के सिनारियो प्रजापति ब्रह्मा जी को ही इनमें से एक का मोह हो गया, दैट इज रोहिणी, अल्देब्रान नाम का जो स्टार है वो। इस एडवर्स कंडीशन से डर के बहुत सारे देवों ने साथ में आके प्रजापति की इस गलत हरकत से उनको रोकने के लिए दे फॉर्म्ड वन दैवी पुरुष जिसका नाम है व्याध, दैट इज दैट पर्टिकुलर स्टार Sirius, and then that Sirius star or that दैवी पुरुष has created Trikanban and then he tried hurt the Mrugarupi Prajapati, and that is the story, complete mythological association of Hindu philosophy as far as the Orion the hunter is concerned. ये इंग्लिश में मैं थोड़ा बोल देता हूँ, ओके कि इसमें बेसिक इंग्लिश में मतलब वैसे के वैसे नहीं बोलूंगा, बाकी चीजें बोलूंगा। Rigveda refers to the Orion constellation as Mriga. Mriga means Hiran, the deer. Okay, two bright stars in front, two bright stars in the rear. They are basically आगे और पीछे के legs हैं। मैसा जो लिखा है ना, MEISSA is the head of that particular Hiran or Mriga. And then when we talk about that particular little intense, light intense area of the Orion Nebula or Iota Orionis, that particular region represents the tail of the Mriga. Then what is that particular Alnita, Kalnilam and Mintaka? These are the three stars which represent the arrow shot by the Vyad to trouble or to kill or at least to hurt the Prajapati Brahma, which is Orion और मृग। तो ये जो स्टोरी है ये ऋग्वेदा से रिफर करके लिखी गई है, ऐसा लिखा है। इसमें बहुत सारे दो कुत्ते हैं उनकी भी बात की गई है। वो बेसिकली अपने इसमें मतलब वेस्टर्न फिलोसॉफी के हिसाब से जाएंगे तो उसमें आपको जरूर वो दिखते हैं, दैट इज कैनिस मेजर एंड बृहद लुब्धक एंड लघु लुब्धक। कैनिस माइनर की कॉन्स्टिलेशन है प्रोसियन वाली, मतलब प्रोसियन है वहां पे, और गोमेजा जो स्वर्ग का द्वार बनाने में एक अहम हिस्सा निभाती है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ particularly Orion constellation. Nataraja, the cosmic dancer, is often interpreted as the representation of the Orion. Rudra, the Rigvedic form of Shiva, is also presiding deity of the Ardra Nakshatra, that is Betelgeuse of Hindu astrology. ज्योतिष की बात कर रहा हूं मैं जस्ट रेफरेंस के तौर पे। तो ये सारी चीजें जो है जो इंडियन एसोसिएशन में है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, दोज हु आर फ्रॉम द ओडिशा, basically those people who have visited the Udaygiri and Khandagiri caves, ये बहुत पुराना काम है। This is around the total work of the 1st century BCE and has striking resemblance with the Orion. Udaygiri and Khandagiri caves form called Kattaka caves और कटक caves, कटक है ना, कटक भुवनेश्वर ये उड़ीसा के मेन एरियाज है, और पार्टली नेचुरल एंड पार्टली आर्टिफिशियल केव्स है। आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस नियर द सिटी ऑफ भुवनेश्वर और कटक। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रिसेम्बलेंस है ये जैन केव्स है बेसिकली, इनका भी ओरायन के साथ संबंध जोड़ा गया है। तो इस तरीके से चाइनीज फिलोसॉफी एकदम ही अलग होती है। ओरिजिनली मिंट द कॉन्स्टिलेशन ओरायन, इट्स शैंग डायनेस्टी वर्जन। उसका और भी एक है, लिटरली चाइना का जो रिलेवेंस हमको ओरायन कॉन्स्टिलेशन से मिलता है वो बेसिकली है शिव, मतलब XIU को शिव बोलते हैं। ओके, इट इज नोन एज शेन आल्सो, मीनिंग थ्री स्टार्स ऑफ द ओरायन बेल्ट, मतलब अलनीतक, अलनीलम एंड विंटाका। तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस ऑफ द एशियन ओरिजिन। जहां तक बात है वेस्टर्न फिलोसॉफी की, तो वेस्टर्न फिलोसॉफी की मेजर स्टोरी तो ये है कि ओरायन एक बहुत बड़ा माइटी वॉरियर या हंटर था। उसको गर्व हो गया, मतलब उसको प्राउड फील होने लगा, तो सब जगह वो टिंके हाथ से घूमता था, यूज्ड टू बूस्ट दैट आई कैन किल एनी लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ सरफेस। आफ्टर हियरिंग दिस थिंग्स, so many god felt jealous. One of them was the Hera. तो हेरा नाम की गॉडेस ने स्कॉर्पियन को मिशन पे भेजा कि भाई इस ओरायन द हंटर को आप पकड़ के या काट के मार डालो। नाउ इन दिस होल ऑफ द स्टोरी ही वाज नॉट बोस्टिंग, मतलब ओरायन द हंटर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, उसमें उतना
शौर्य या उतना क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं वेलोर था। तो ये जो इतना सब उसमें था, उसके चलते उन्होंने अपने गधा जो दिखाया ना, गधा मतलब वो जो भीम वाला गधा या हनुमान जी वाला गधा है, उससे उन्होंने या उस पर्टिकुलर वेपन से उन्होंने उस स्कॉर्पियन को तो मार गिराया, बट मरने के पहले स्कॉर्पियन भाई साहब ने उसको डंक मारा। इस चक्कर में उसको भी डंक मारने के बाद ओरायन भी मर गया। अभी ये दोनों का ये जो झगड़ा है, ये डिपिक्ट करने के लिए यू मस्ट हैव ऑब्जर्व whenever there is a rise of Orion in the east, Scorpion is about to set in the west. Scorpion almost west में set होने की कतार पे रहता है। तो दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर ये दोनों के अंदर का जो झगड़ा है, फाइट है, उसको आसमान में भी रिप्रेजेंटेशन मिल गया। स्टोरीज ही कुछ देख के इस तरीके से बनाई गई। नाउ दिस इज द वन थिंग, बट ओरायन को एक ही काम नहीं दिया गया था। ओरायन को कुछ 12 साहसी का कृत्य करने का काम दिया गया था। ऐसा ही और फाइटर है हरक्यूलिस, तो उसमें बाद में जाएंगे। दूसरे एक स्टोरी के हिसाब से ओरायन पोसाइडन नाम के मतलब नाम के भगवान का बेटा था। वो बहुत बड़ा फाइटर था। आर्टेमिस, आर्टेमिस मतलब चांद्र देवता, मतलब चंद्रमा पकड़ लीजिए। तो ये ओरायन के प्यार में पड़ गई। अभी when this particular Artemis has fallen in love with this particular Orion, उसका जो रात का काम है, ड्यूटी असाइंड है कि उसको रात को लाइट देनी है पृथ्वीवासियों के लिए, उस काम में उसने आनाकानी करना शुरू किया। आफ्टर हर इनसिंसियरिटी इन डेसिग्नेटेड वर्क, एवरीबडी फेल्ट कि ये सही नहीं हो रहा। सो after repeated request also, when that Artemis, that is Chandra or moon, is not following or performing her duties well, तो Artemis का जो ट्विन ब्रदर है, कौन है? अपोलो। अपोलो मतलब सूरज। अपोलो डिड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक दिन जब ओरायन समुद्र में नहाने गया था, तो अपोलो ने अपने ऊर्जा से, इंटेंसिटी से उसको काला कलूटा बना। सो वंस ही गॉट हिज कॉम्प्लेक्शन टर्न टू वेरी डार्क, आर्टेमिस मतलब चांद्र देवता उसको पहचान नहीं पाई। एंड देन अपोलो हिमसेल्फ टोल्ड आर्टेमिस कि भाई आप इसको मार दो, तो गलत सा जीव है। सुबह से जब ओरायन के दर्शन नहीं हुए थे, तो आर्टेमिस भी थोड़ी इरिटेटेड थी। तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने सीधा इसको ओरायन को मार डाला। मरने के बाद, बाण मारने के बाद कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद ओरायन की डेड बॉडी जो है समुद्र के किनारे आ गई। और फिर जब उनको अपने गलती का एहसास हुआ आर्टेमिस को, तो उनका दुख जो है वो अनकाउंटेबल कंडीशन में चला गया। इसके बाद भाई सुखी या सॉरी एक क्या बोल सकते हैं, हैप्पी एंडिंग करने के लिए इन दोनों को आसमान में जगह दी गई। दैट इज व्हाट बेसिकली स्टोरी है। अभी इसमें फिर चंद्र देवता के साथ आर्टेमिस के साथ क्या हुआ? आर्टेमिस बिकॉज शी लॉस्ट हर लव फॉर लाइफ, तो उसके बाद जान चली गई और बेजान सा वो गोला जो अभी सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो चंद्रमा आसमान में घूम रहा है। ऐसी वेस्टर्न फिलोसॉफी वाली स्टोरी है। सो यू मस्ट हैव सीन there are a lot of stories association with Orion because it has been observed by every, मतलब इंटरनेट पे अगर विकी वगैरह आप घूमोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ मिडल ईस्ट या फिर चाइना या फिर सुमेरियन कॉन्स्टिलेशन नहीं है। सुमेरियन फिलोसॉफी या सिविलाइजेशन में ही स्टोरीज नहीं है। कैंडेवियन से लेके हंगेरियन से लेके अमेरिकन, साइबेरिया, everywhere there are a lot of stories pertaining to the Orion constellation. But then I'm going to touch upon something which is related to the Indian context, and that is something about Agrahayana. What is that Agrahayana? Agrahayana is the name of Mruga Nakshatra in the मतलब Vedic period. Now you all know Vedic period is supposed to be expected to be at least 3800, मतलब 3800 साल से 4400। So if we talk about BCE, then 2000 or 2400 or 4000, something of that kind. So these calculations were initially put up by the Bal Gangadhar, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, and Tilak was very good in mathematics. So Tilak has given this philosophy from understanding that the vernal equinox, मतलब वसंत संपात बिंदु, vernal equinox was lying
in Agrahan means Orion means Mruga Nakshatra approximately 4500 4500 साल पहले वर्नल इक्विनॉक्स अगर अग्रहायण मतलब मृग नक्षत्र में था तो that directly clarifies that the ancient Vedic literature may be around 6000 year old. Now this all things finally there is one good book by Professor Mohan Apte which also mentions about the Vedanga Jyotish, which I keep giving reference that this Vedanga Jyotish is not about the Jyotish or Rashi Bhavishya, about the mathematical calculation and its association with the keeping during the Vedic period. It says that the Vedic period may be at least 3800 years old from now. तो ये सारी स्टोरी एसोसिएटेड है अग्रहायण मतलब मृग नक्षत्र के साथ. And now the very important thing is going to happen in next month. Almost monsoon has reached to the is about to reach. Pre-monsoon has reached Kerala. So monsoon is about to reach somewhere around 27th of the May, and it will reach Mumbai or nearby coastal region around at least 31st or 1st, 2nd of the June, when mostly it is expected that 7th to 10th of the June is the period when the monsoon will reach the middle of the India, specifically Mumbai area. What is it? This is the period when India or Mumbai area gets the Mrugata Paus, means sun is in the Mruga Nakshatra. So whatever you are seeing here, na, Mesa, that is the head of Mruga. So वो मृग नक्षत्र जो है वो है उसका योग लोकेशन वो है. सो वहां पे आपका सूरज आता है 7 to 15th of the June, and whatever rain we get is designated as per the timekeeping Mruga Nakshatra's rain. Okay, so this is what is about Mruga Tarka Samuha. Now I must have given some jumbled explanation because of the language barrier. I have to speak in bit of English and bit of Hindi, जबकि मैं ये मराठी में अच्छे से बोल पाऊंगा. So now let's get and take bit extra advantage of the Orion constellation. Orion constellation will help you to identify Aldebaran from the मतलब रोहिणी नक्षत्र from the Taurus means वृषभ राशि, Sirius from the Canis major means बृहद लुब्ध, the brightest star of the night. यहाँ को मैंने चित्र में से पहचान सकते हैं. Then a bit of the Gemini, that is Castor Pollux is in the direction. एक मिनट ये क्या उल्टा करके तो अल्फा कौन है इसमें, ये बीटा है. ओके, मतलब अल्फा बीटा दैट इज बिटलग्यूस एंड रैगेल के लाइन में ऊपर जाएंगे तो आपको कैस्टर एंड पोलिक्स मिलेंगे. आप अगर बिटलग्यूस एंड बेलाट्रिक्स के लाइन में जाएंगे तो आपको प्रोसियन दैट इज प्रश्वा ऑफ द कैनिस माइनर मिलेगा. और अलनितक अलनीदम मिंटाका के लाइन में सैफ की तरफ जाओगे तो सीरियस ऑफ कैनिस मेजर मिलेगा. और बेलाट्रिक्स की तरफ जाओगे तो अल्देबरान यानी आपको रोहिणी नक्षत्र का तारा मिलेगा. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स गो फर्दर. ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दिए हुए मैप्स है. आप इसमें आराम से उनकी इंटेंसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो. Very important thing for me here is this M43 and M42. M42 is Great Orion Nebula, M43 is adjacent nebula, and then there's some where there will be M70. This is M78 location. Okay, so these three important things we will see through the pictures. I'm not using software only because the what you can say internet speed is not supporting. So let's go further. Deep sky object today we will study in this particular constellation. Before that, let us talk something about the brighter stars in this particular constellation. तो भाई ये जो बेटलग्यूस है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. Okay, this is designated as Alpha Orionis and is a massive M-type red supergiant star nearing the end of its life. It is expected कि in every what you can say galaxy or nearby area of every star system there will be some supernova, at least in the 400 years. हमने पिछले 400 साल में कोई नेकेड ऐसे विजिबल सुपरनोवा नहीं देखा.
So Eta Carini was one expected member. Then later date somebody said that Antares of the Scorpion constellation may be one member, and then somebody said that Betelgeuse may be a member. But today's, what you can say, precise studies are telling that this particular Betelgeuse may become nova or supernova in next 1 lakh year. तो भाई आप का तो मुझे नहीं पता, मेरी कोई गारंटी नहीं अगले 1 साल तक, लाख साल की, तो शायद हमको बिटलग्यूस सुपरनोवा होते हुए नहीं दिखेगा। ये सुपरनोवा होने के बाद इतना बड़ा दिखेगा कि दिन में चंद्रमा से भी दिखेगा। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, यू नो इट इज इन द राइट शोल्डर ऑफ द हंटर, दैट इज ओरायन द हंटर। नेक्स्ट इज बेसिकली आपका राइगेल। इट इज ऑल्सो वेरी ब्राइट स्टार, अप्रोक्सीमेटली 600-700 लाइट ईयर की दूरी पे है ये, एंड दिस इज बेटा ओरियनिस। इसके माइनर डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं, ओके। हम बेलाट्रिक्स की भी बात नहीं करेंगे, मिंटा का, अल्नीतक, अल्नीलम, सैफ, मैसा, इन सब की बात नहीं करेंगे, ये आप इंटरनेट पे अच्छे से ढूंढ लीजिए। आई जस्ट टेल यू द डिस्टेंसिंग सो दैट यू विल गेट टू नो कि ये जो एक्चुअल उनका ब्राइटनेस यहाँ पे दिखाया है उससे बहुत ज्यादा ब्राइट। जैसे देखिए बिटलग्यूस इज अराउंड 624 लाइट ईयर्स एपरेंट, मतलब विजिबल मैग्नीट्यूड इसकी 0.42 है। रेफरेंस के लिए हमेशा आप ये पकड़ेंगे कि 0 मतलब वेगा। आसमान में जो अभिजीत नाम का तारा दिखता है लायरा नाम की कॉन्स्टिलेशन में, स्वरमंडल, ओके, तो ये लायरा कॉन्स्टिलेशन में जो अभिजीत दिखता है उसको 0 के आसपास पकड़ा जाता है, 0.03 है बेसिकली वो। उसके रेफरेंस में जब भी मैं कोई बोलू वैल्यू, तो निगेटिव साइड वाली ब्राइट वैल्यू और पॉजिटिव साइड वाली थोड़ी कम ब्राइट वैल्यू। तो बिटलग्यूस इज 0.42 अपरेंट मैग्नीट्यूड, राइगल इज 0.18, मतलब वेगा के आसपास वाला इनमें से, वेगा के 0.0, ओके, 0.42 है अपरेंट पॉइंट। और ये बहुत वेरी होती है, इतनी वेरी होती है कि कभी कभी मतलब मासिव डिफरेंसेस आपको नेकेड आई से भी कभी कभी कुछ चीजों में दिखेगा, नॉट नेसेसरली दिस। तो बिटलगिस इज 624 624 लाइट ईयर, राइगल इज 773 लाइट ईयर, देन अल्नीतक, अल्नीलम, मिंटा का, दो दिन लुक इन लाइन, मिंटा का इज 900 लाइट ईयर्स, अल्नीलम इज 1340 लाइट ईयर्स, एंड अल्नीतक इज अप्रोक्सीमेटली 800 लाइट ईयर्स। बाकी चीजों को नहीं पढ़े बोलूंगा मैं क्योंकि दैट विल नॉट बी ऑफ मच यूज टू यू। सो लेट्स गेट इनटू द नाउ डीप स्काई ऑब्जेक्ट। तो डीप स्काई ऑब्जेक्ट में मैं आपको पहला चित्र दिखा रहा था, M42, दैट इज ओरायन नेबुला, जो मैंने उस सॉफ्टवेयर पे भी दिखाने की कोशिश की, ठीक से नहीं दिखा। दिस इज स्टेलर नर्सरी। इसमें तारों का जन्म होते हुए लोगों ने, जो एस्ट्रोनॉमर या साइंटिस्ट, थ्योरेटिकल फिजिशियन है, जिन्होंने, फिजिसिस्ट है, जिन्होंने इनको देखा है, वो ये बोलते हैं ये दिस इज ट्रेपेजियम क्लस्टर, ओके, और मेनी न्यूबॉर्न स्टार्स है इंक्लूडिंग सेवरल ब्राउन ड्रॉप्स भी है, ड्वार्फ भी है यहाँ पे। ये जो M42 है, एक स्पेक्टेकुलर ऑब्जेक्ट है, क्लियरली आइडेंटिफाइबल विथ नेकेड आई, टेलीस्कोप से तो बहुत ही बढ़िया दिखता है। ये डिफ्यूज नेबुला है, सिचुएटेड इन द मिल्की वे, being south of the Orion belt in constellation of the Orion. It is the brightest nebula and visible to the naked eye night. Okay, mass has approximately 2000 times that of the sun. Okay, इसका विड्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 24 लाइट ईयर का है। मतलब सोच लीजिए कि आप ये जो देख रहे हैं ये 24 लाइट ईयर्स का विड्थ है, when the almost approximation of the complete periphery of the solar system is 1 light year. इसमें आपको मालूम भी होगा हिसाब कि सन इज एट सेंटर, देन मर्क्यूरी अप्रोक्सीमेटली एक पकड़ लीजिए 6 करोड़ ईयर्स, देन 10 करोड़ ईयर्स वीनस, देन 15 करोड़ ईयर्स अर्थ, देन 22 करोड़ ईयर्स मार्स, like that we keep moving approximately few. Sir, now stars are clearly visible. Okay, some people are now able to see sky. So जो हमने शुरुआत में we have spent lot of time, some people must not have liked it also, कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, किसी को बोर हुआ होगा, but let me tell you very frankly, there is no easy way to learn the things. Certain things will go in my way, certain things you can suggest me, you have my WhatsApp number, you can give me suggestions, sir lecture इस तरीके से लीजिए and all, we will continue. This is free of cost, so इसमें आपका कुछ जा तो नहीं रहा है, आप आपका वैल्यूएबल समय दे रहे,
मैं भी अपना वैल्यूएबल समय दे रहा हूँ, एंड बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ अस आर सेल्फिश, एंड वन सेल्फिश इंटरेस्ट इज आपको पढ़ाने के बहाने मुझे पढ़ने मिलता है टाइम निकाल के, नहीं तो मैं तो पढ़ूंगा नहीं, और आपको कुछ नया सुनने मिलता है जिससे आपको पढ़ने की प्रेरणा मिले. So in all respect, everybody is gaining something. That is really, really win-win situation. So I was talking to you about Orion Nebula. It's basically stellar nursery, and I told you that width is approximately 24 light years, located at approximately 1500 light years from us. So don't even think of going there. Just watch the beauty by the telescope or some internet pics on videos. Now we'll go into the similar thing, that is some other nebula, and that is called N78. NGC is the short form of New General Catalog Number. So NGC, New General Catalog, that is what it is, number 2068. Okay, its overall magnitude is 8, means it is also quite visible by the binocular. Okay, it's a little dimmer than the Great Orion Nebula, approximately same distance at 1600 light years from the Earth. Visibly, it can be easily mistaken for the comet in the eyepiece of the telescope. M78 is associated with the variable star of V351 Orionis, and you can see here it's basically comet-like object which included by the Charles Messier in the catalog of the comets. Okay, in 1780, of course, long back. That time there were so many apparatus were not existing. It's basically diffuse reflection nebula of a group of nebulas that include NGC 2064, 2067, 2071. It's a Orion B molecular cloud complex. तो उसमें हम ज्यादा जाएंगे नहीं, अभी हम जाएंगे दूसरे इंटरेस्टिंग चीज में जिसका नंबर है, मेसियर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डीप का ऑब्जेक्ट है, NGC 199. ये बेसिकली ब्राइट नेबुला है, फेयरली ब्राइट. इट हैज गॉट इंटीग्रेटेड मैग्नीट्यूड ऑफ 10.5, डिस्टेंस 1500 लाइट ईयर्स के आसपास ही है. इसमें डस्ट फील्ड ब्राइट नेबुला है बेसिकली, विथ अ वास्ट वॉल ऑफ द एम्प्टी स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक पैच. ये जो ब्लैक पैच है बेसिकली ये डस्ट फील्ड ब्राइट नेबुला का जो रिफ्लेक्शन है आजू बाजू से उसके बीच का एक एरिया है. नॉट रियली क्लियर व्हाट इज इट, बट एग्जिस्ट करता है, टेलीस्कोप में अच्छे से दिखता है, बड़े साइज. और एक ऑब्जेक्ट देखेंगे, IC 434 इसको बोला जाता है. आप समझ ही चुके होंगे, हॉर्स की तरह हेड है तो हॉर्स हेड नेबुला बोला जाता है इसको. इट कंटेन्स डार्क डस्ट क्लाउड whose shape gives nebula its name. It's also known as the Barnard 33. It's a small dark nebula जो Orion Constellation का हिस्सा है, located just south of the अलनीता तीसरा तारा है ना उसके आसपास. तो ये भाई हॉर्सेड नेबुला है. तो ओरायन कॉन्स्टिलेशन में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और कभी ये मत सोचिए कि छोटे से टेलीस्कोप से आपको ये सब ऐसा दिखने वाला है. ये सब हाई फाई बड़े नेबुला से लिए गए फोटोज है. ये एक इमिशन नेबुला है 2174. ये 6400 लाइट ईयर की दूरी पे है, और इसको देखने के लिए कोई बड़ा सा टेलीस्कोप की जरूरत आपको पड़े. M43 नाम का और एक नेबुला है, इसको डी मैरन्स नेबुला बोलते हैं. स्टार फॉर्मिंग नेबुला है, प्रोमिनेंट H2 रीजन है, इक्वेटोरियल कॉन्स्टिलेशन है ओरायन के आसपास में. फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्वेस डॉटस डी मैरियन ने कुछ समय पहले 1731 के आसपास इसको ढूंढा, तो उनका नाम इसको दिया गया. ओके, एक बर्नार्ड्स की जगह है जो भी है ओरायन कॉन्स्टिलेशन में, आप देख सकते हैं कुछ लूप जैसी कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसको इमिशन नेबुला है, और इसको बर्नार्ड्स लूप क्योंकि बर्नार्ड ने उसको ढूंढ के निकाला तो वो नाम दिया गया. ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, आपको ये बोरिंग लग जाएगा. सिर्फ इतना ही कि आपके पास अगर एक ग्रुप है या किसी के पास बड़ा सा 10-20 इंच का टेलीस्कोप है, तो ये सारी चीजें देखना, उनका फोटोग्राफी करना कुछ लोगों का शौक होता है, ऐसे लोग ग्रुप बनाते हैं. मैं ये सब चीज में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा अवेयरनेस फैलाता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, वो थोड़ा सा लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. सो नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई एंड, लेट मी नो यूर एक्सपेक्टेशन. तो ये बर्नार्ड्स लूप के बाद ये एक फ्लेम नेबुला भी हम देख सकते हैं, फ्लेम्स है इसमें. वैसे ही एक ओरायन मोलिकुलर क्लाउड भी है. इनके ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं,
कैनिस मेजर आज कवर नहीं करेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी रीच 9:55. सो जो अब तक पढ़ा उसमें से कुछ लोगों को स्काई क्लियर है, तो भाई स्काई व्यू वेस्ट फेसिंग आज का ही देखना है तो यहाँ देख सकते हैं. वेयर इज दैट 20 तारीख वाला, ये 13/5 का ही, 20/5 का पनवेल वाला आपको चल जाएगा क्योंकि आपका लुधियाना उसी लॉन्जिट्यूड के आसपास आता है. तो जिनके पास क्लियर स्काई है ये ढूंढने की कोशिश करिए. मैं जाता हूँ. अच्छा, उसमें मैंने स्टेलेरियम बंद कर दिया क्योंकि वो लुधियाना व्यू नहीं आ रहा था. आपको ये चल जाएगा, इससे ढूंढने की कोशिश करिए. बिफोर क्लोजिंग, इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो. सर कैन आई नो द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर? हाँ, स्टेलेरियम. उत्कर्ष सॉफ्टवेयर का नाम स्टेलेरियम है जो हम यूज करते हैं. आप सब लोग भी यूज कर सकते हो. विजिबल, क्लियरली ऑडिबल, यहाँ तक तो मैं देख रहा था. देन इन विच डायरेक्शन शुड आई सी? रुद्राक्ष, व्हाट यू वांट टू सी बेसिकली? आप जो भी देखना चाहते हो. वेस्ट से हम नॉर्मली शुरू करते हैं. आपके सामने जो चित्र है उसको आप सर पे ले लीजिए, लैपटॉप को. ओके, और वेस्ट की तरफ देखना चालू करिए तो ये सब ऐसी चीजें आपको दिखेंगी. Then Bhandara, Mr. Dr. Sir, now stars are clearly visible. Okay, please type name of the app. Stellarium है. एक्वेरियम होता है ना, वैसे स्टेलारियम स्टार का. स्टेलार नर्सरी, तारों की नर्सरी, तो ये स्टेलारियम. आप देखिए स्पेलिंग मैंने सही डाला है कि नहीं. तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम यहाँ रुकना चाहेंगे. चीजें बहुत ही रहेंगी आगे, मैं लेक्चर प्रेजेंट बताते रहूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेक्चर कैसा लगा इसका फीडबैक आप गूगल पे जाके एक लिंक पे दे सकते हैं जो मैं आपके तीनों ग्रुप में डाल दूंगा. लोग लेक्चर अटेंड करते हैं. मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि यू कैन अरेंज दिस लेक्चर्स इन स्कूल कॉलेजेस. तो वहाँ पे एक जनरल टाइप का एस्ट्रोनॉमी लेक्चर हम लोग आपको देना चाहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है. तो थैंक यू वेरी मच. आज आप लोगों ने, काफी लोगों ने ज्वाइन किया. ऑलमोस्ट 35-36 पीपल आर हियर. So now it's time to say good night. Okay, thank you very much for joining. If you have any doubts, keep posting it to my personal WhatsApp number with your introduction, and groups will always be kept silent without any access for you to comment or anything. Okay, I'll put just link there so that you can give your feedback. Thank you so much. Good night. Take care. Bye bye. You can leave the class now and you can always give me suggestion कि सर इस तरीके से क्लास लीजिए.